Yes, Srivastava. This is the matter regarding the prescription of the qualification of B.ed for the post of assistant teacher. Earlier, there is an interim order granted by my lord that has been modified by the Honorable Supreme Court. And now the issue has been settled. So far, there is no such requirement for adjudication on merits. The judgment of the Honorable Supreme Court is in the second, in item number 9. Pleadings exchange हो गई हैं? Yes, Lord. Pleadings exchange हो गई हैं? Lord. And it has been settled, my lord. It has been settled. Nothing remains, my lord. Now they can please give it. In the next case, my lord, item number 9, page number 15. Yes, matter has been settled by the apex court. My lord. 100 grams of interim order was granted. Already settled. हैं? State की क्या reply? Reply copy दे दिया? They are filing intervention application. Intervention application आप लोग ने फाइल कर रखी है. What does Mr. Anurag Srivastava says? The matter has already been settled by the apex. On what is left now? Then देख लो, आप देख लो. Well, they know very well, my lord, because after the interim order granted by this honorable court, my lord, they have approached to the Supreme Court, and that has been only modified only to the extent that they have been allowed to participate in the counselling. Okay. That is the only. And appointments have already been made, Your Lordship. My lord, that observation has been given by the Honorable Supreme Court. Ongoing selection process. Because, Your Lordship, that judgment also protects the candidates of B.ed, Your Lordship. No. Because if Your Lordship may kindly see the My lord, last kindly page of the appreciate in judgment. that order, that modification order. Well, there is nothing for adjudication, my lord. So far as that interim order is concerned, granted by the Honorable Supreme Court, that their right has been already reserved. Lordship, many petitions are being filed before. Yes. Yes, Your Lordship. Yes. And many petitions. That original notification has been quashed by the Honorable Supreme Court. And not only the SLP, the original writ petition was filed before the Honorable Supreme Court. Page number 50 में kindly 50 my lord. Page number 50. In the next case, my lord. Next case, please. The Honorable Supreme Court has decided the original writ petition, my lord. original writ petition means. There are one SLP against the order of the Rajasthan High Court, my lord. And along with that, 2 original writ petition filed before the Honorable Supreme Court. Achha. So that original notification has been quashed, basing on which they have framed the rules. Okay. Then what is the matter of adjudication on merits, my lord? No, my lord, so far as that observation. The selection list was published way back on My the selection list was published way back on 2/7/2023. my lord, their appointment is already subject to the without including the selected candidates as party. After challenge. my lord, it is an observation by the Honorable Supreme Court that their appointment is अच्छा ये already. नोटिफिकेशन कौन सा था? That is 26th of June, my lord, 2018. 18. 18 का था. ठीक है. तो ये नोटिफिकेशन के बेसिस पे They have framed the rules. मतलब the state government. And that notification has been quashed. For appointment of B.ed candidates for class primary section. अच्छा नहीं तो अगर 28/6/2018 का जो नोटिफिकेशन है जिसके बेसिस पे यहाँ रूल्स फ्रेम हो अगर वो सेट असाइड हुए तो बचा क्या? Nothing remains. But the That's why I am saying. The question. And there, my lord, kindly. It was filed itself at a आप वहाँ belated नहीं थे क्या उस समय सुप्रीम कोर्ट के सामने इसमें? My lord, अच्छा kindly appreciate. State of Rajasthan. Their appearance in the examination is already subject to outcome of the petition that it has been already observed by the Honorable Supreme Court. So their right has already. ये लोग डिप्लोमा होल्डर्स हैं क्या? We are B.ed. They are B.ed. आप B.ed आप डिप्लोमा Yes, होल्डर्स हैं. Okay. So their appearance in the counselling, my lord, that has been made subject to the outcome of the petition. It has been observed by the Honorable Supreme Court. अच्छा So, subject to that. yes. So now how they can argue? आर्गू नहीं करने के लिए मना करते हैं सर तो लिखते हैं आर्गू नहीं करने के लिए मना किया No, I am saying that how you can argue on this point. I am not saying that you.
ये इंटरवीनर्स है, They are interveners. तो उनको सुनना, नहीं इंटरवीनर Their rights is very क्योंकि उसका important राइट in इफेक्ट particular. होगा ना, इसलिए इंटरवीनर्स तो है। नहीं हमारा अपॉइंटमेंट हो गया We हमने have बोला already कि आपने बोला appointed. कि ठीक है आप लोग इंटरवेंशन में बहस कर लेना, अदरवाइज वी हैव अ राइट, We have a right to be heard. Your right is already subject to the outcome of the writ petition. It has been observed by the Honorable Supreme रेड Court. पिटीशन का ऑर्डर कहाँ है? रेड पिटीशन का ऑर्डर कहाँ है? रेड पिटीशन में जो ऑर्डर हुआ वो कहाँ है? हैं? Bill number 9. है भैया? ठीक है। इसमें दोनों ही तरफ से तो पिटीशंस फाइल हुई थी, बीएड की तरफ से, डिप्लोमा होल्डर्स के, तो दोनों ही तरफ से थे। पहले इन लोग ने फाइल किया था, कोई और पिटीशन भी पेंडिंग है? थोड़ा सा First petition was filed by me on किस तारीख को फाइल किया था आपने ईशान? 30th of May 2020. ये 7344, 3541. Serial number 8. अच्छा 8 लगा हुआ, सीरियल नंबर 8. 8, In the month of May. अच्छा 3541 मिला था, ओके। उसमें क्या प्रेयर थी आपकी? It is same prayer. सेम Same प्रेयर prayer. फॉर In all the three petition, one of the prayer is same. सेम। अच्छा क्या मांगा था आपने? देखिए That is at page number 34. टेन 10.4 में 28/6/2018 को, तो ये तो नोटिफिकेशन कॉश हो गया, Quash हो गई. First one. और ये रूल्स था उसी के पर्सनस में बेसिस पे। Yes. And the review has already been dismissed by the Honorable Supreme Court. रिव्यू भी इसका था, इसी ऑर्डर का रिव्यू भी किया था। Yes, ma'am. वो कहाँ है ऑर्डर? That is on the last date of hearing we have supplied me. This is Whether the apex court was informed that their appointment has already taken Well, on place. that day there was no such on that day when the Honorable Court has granted the interim stay. There was no such appointment was made. अच्छा जिस दिन They have approached to the Honorable Supreme Court. इनका, Malad. appointment Only कब- counselling was going on. अच्छा इनका अपॉइंटमेंट कब हुआ? Appointment after the counselling, after the interim order passed by the Honorable Supreme Court. That's why there, द इंटरिम स्टे? इंटरिम स्टे कहाँ है? दे दिखाइए। Malad, that is in item number 9. चलो भाई ला इंटरिम स्टे ले आओ। There is a specific stay with reference to their appearance in the counselling with regard to the qualification of the B.ed. नहीं ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट Apex court. एपेक्स कोर्ट में भी तो Apex ऑर्डर court, होते हैं। हाँ एपेक्स कोर्ट का तो इंटरिम। एंड देयर अपॉइंटमेंट्स आर आफ्टर दिस Yes, after this, yes, Malad. After this. Actually, that was a prayer before the Honorable Supreme Court. ऑर्डर हो गया, ये तो खत्म हो गया। Actually, Malad, that was the prayer of the before the Honorable Supreme Court that since the 30th was the last date of counselling,
पिटीशन नहीं तो आप एक चीज देखिए कि ऑर्डर पास है, ठीक है, आप ये ऑर्डर इस 23 का ऑर्डर है ये जो राजस्थान होटल वाला था, ये जो जगह है ये राजस्थान, तो ये जगह पर एक ऑर्डर हो नहीं तो डिफरेंट ये 11 मिस्टर ऐसा है कि देखिए सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जो था राजस्थान, ये जरूर है कि जो नोटिफिकेशन चैलेंज किया है आपने जिसके बेसिस रूल ये तो स्ट्रक डाउन हो गया, ठीक है ना, बट आफ्टर वी हैव पास्ड एन ऑर्डर द सुप्रीम कोर्ट हैज मॉडिफाइड बट नाउ दे हैव बीन सिलेक्टेड एंड appointed and appointment, so they have to be heard. Yes, yes. They have to be We have heard. no objection. Their intervention may be allowed because the observation of second para may kindly look. कौन सा? Yes, sir. That order, that interim order, Interim order. It- will, second the para. final outcome will be subject to the which was in progress prior to that, है. the said interim order. हाँ, तब तो वो तो And सुनना तो clarify the पड़ेगा recruitment इनको. process, which was in progress prior to the date of the said interim order, shall continue appointment if any made thereunder will, however, remain subject to the result of consideration so and so. हाँ, पर कौन सा ऑर्डर पड़ रहा है? Second para, my lord, of that interim order. अच्छा, therefore, if Therefore, to the said extent, we order exercise are passed by the and clarify that the recruitment is in progress prior to the date of the said interim order passed by shall continue and the appointment, if any made thereunder will, however, remain subject to the result of this one. So petition number किस number? This is 5788 serial number 9, my lord. Serial number 9. 5 In that case, there was an interim order. नहीं तो अभी तो ये रिट पिटिशन पेंडिंग है, Yes. ठीक है ना, तो इसका जो फाइनल आउटकम होगा उनको सुनने के बाद Yes, तभी ये we have no objection, my lord. All the intervention may be allowed. हाँ हाँ All the intervention may be allowed. They may be permitted to argue whatever they want to argue. Our only submission is, since the issue has been settled, the notification has नहीं been तो बट quashed. दे हैव टू बी हर्ड ना. Yes, my lord. इंटरवीनर सबकी अलाउ कर दिए. काउंसिल फॉर द पिटिशन इज डायरेक्टेड टू इंप्लीड ऑल द इंटरवीनर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ विदिन 2 days फ्रॉम टुडे एंड Not that implement, so far as implement, they may be allowed, my lord, because there are more than 100. कितने लोग, बहुत लोग हैं. Yes, my lord. They may be allowed to argue, my lord. We have no केस objection. में भी वही था क्या? इनका अपॉइंटमेंट कुछ का हो चुका था क्या? नहीं, किसी का नहीं हुआ था. राजस्थान वाले में नहीं हुआ था अपॉइंटमेंट. नहीं, राजस्थान वाले में तो क्या हुआ था? राजस्थान वाले में ये था योर लॉर्डशिप कि B.ed कैंडिडेट्स को पार्टिसिपेट करवाना था राजस्थान गवर्नमेंट को. No, no. और जब करवाना था तब दैट पर्टिकुलर नोटिफिकेशन वाज इन In the एग्जिस्टेंस. state of क्योंकि Rajasthan- उनको अलाउ नहीं किया गया और उसको क्वॉश कर दिया गया. दे वेंट टू द सुप्रीम कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है योर लॉर्डशिप, इफ योर लॉर्डशिप में काइंडली सी देवेश शर्मा का लास्ट पैरा ऑफ द जजमेंट, द राजस्थान गवर्नमेंट वाज नॉट राइट इन नॉट कॉलिंग द B.ed कैंडिडेट्स फॉर फिलिंग अप द फॉर्म्स. Because the rules नहीं तो rules ऐसा were in करके operation. इंटरवीनर्स का अलाउ कर देते हैं, इम्प्लीटमेंट छोड़ देते हैं. Yes, ma'am. है ना, Yes, और ma'am. आप लोग को जो कहना हो My lord. ठीक है ना, बट दैट इज ऑल्सो क्योंकि वो My अननेसेसरी lord. का एक वो My lord. होगा फिर They may be allowed, my lord. हाँ, They may be हाँ, allowed. वो सब वो कर दीजिए. My lord. इंटरवीनर अलाउ और द
हाँ कॉपी दे दो जो मतलब- है ना द काउंसिल फॉर द पेशेंट शैल प्रोवाइड अ कॉपी ऑफ द रिट पिटीशन ऑर्गेनाइजेशन टू द इंटरवीनर्स रिप्लाई है ना एंड इंटरवीन है ना और नाम छाप दीजिएगा इंटरवीनर आप लोग नाम तो छपा ही है ना लेट द मैटर बी लिस्टेड फॉर फाइनल डिस्पोजल जनवरी में लगाते हैं है ना इधर नहीं हो पाएगा क्योंकि इधर बहुत टाइट प्लेस है हम लोग एंड लेट द मैटर बी लिस्टेड ऑन 18th जनवरी लगाता हूँ ठीक है 18th जनवरी Lordship, the matter which was pending before the Supreme Court was listed on Friday. अच्छा जो था उसमें जितने सारे इंटरवीनर सुप्रीम कोर्ट में भी कुछ लोग गए हुए हैं फ्रॉम द B.ed कैटेगरी, तो उन सभी को सुप्रीम कोर्ट ने एज पार्टी इम्प्लीड करने के लिए पिटिशनर लाइक देयर, so we have been directed to implead them as parties. Your Lordship. तो इंटरव्यू अलाउ तो करे चीज वही हो That जाएगी petition already become infructuous, my lord, because that was चलिए against. चलिए they have to be heard But some they have to be heard they have to some be early it may be taken, my lord. 18th जनवरी लगा रहे हैं अपन 18 जनवरी लगा रहे हैं और 18 तो 19 में करके इसको खत्म करें है ना 18 में तो हैं फाइनल हम आ गए तो अभी करते हैं But could it be 18th जनवरी could be फॉर फाइनल डिस्पोजल first week of January? Final. If my lord. फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी तो आप समझ ही रहे हैं ना आधे लोग तो घर में बैठे रहेंगे फॉग है ये है वो नहीं आ पा रहे हैं तो यू नो द थिंग्स कोर्ट जब ओपन होती है तो हमको भी ब्रीदिंग स्पेस चाहिए ना तो एक 18 आ जाइए 18